आज का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग फाइंड कमांड इन MS वर्ड वी कैन सर्च कैरेक्टर्स, फॉर्मेट, सिंबल्स या all of the above. And the correct answer is all of the above. The find pen helps you find characters, words and phrases if you want. Okay. Next question is, when 3 happens, underscores, equal signs, asterisk or number sign are typed and then the enter key is pressed, the auto format feature dash place a border above the paragraph, creates a number list, changes the characters to an M dash, creates a bulleted list. And the correct answer is places a border above the paragraph, above a paragraph. Next question is, which of the following is the mail merge helper step? And the options are merge the two files, create the main document, create the data source, or all of the above. And the correct answer is all of the above. Question number 4 is, Control plus J used for align, justify, insert hyperlink, find and go to. And the correct answer is align, justify. Question number 5, which of the following is not home ribbon? Not on home ribbon. And options are columns, font color, paragraph or clipboard. And the correct answer is columns. बिकॉज जब हम कॉलम क्रिएट करते हैं तो हमें इंसर्ट टेबल करना होता है और जो होम रिबन पे नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 6 इज, स्क्रॉल बॉक्स ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार इंडिकेट्स द. जो स्क्रॉल बॉक्स है उसके ऊपर जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, डिस्टेंस of the insertion point from the left margin, current relative location of the document portion displayed in the window, rank of the word in which the insertion point is found. And the correct answer is C, current relative location of the document portion displayed in the window. Question number 7 is, what does रूलर हेल्प? जो MS वर्ड के अंदर रूलर होता है वो किस चीज़ के लिए बना है या वो किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑप्शंस आर टू सेट टैब्स, टू सेट इंटेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स और ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट? जो ड्रॉप कैप्स हैं उनको डॉक्यूमेंट में क्यों यूज किया जाता है? टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, टू बिगिन ए पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर और नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर. Question number 9 is, to use your keyboard instead of the mouse to select tools on the ribbon, you display the key tips by pressing the dash key. Alt, Control, Shift plus Enter or Alt plus Enter. And the correct answer is Alt. Whenever you press Alt key over the keyboard, the shortcut keys or key tips highlighted in the menu. Question number 10, switching between portrait and landscape modes involves header and footer toolbar, print layout view, page setup dialog box or none of the above. And the correct answer is
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो आज की वीडियो हमारी इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।